Hello guys, once again welcome you all. My name is Surya sir. Watch this particular video till the end guys, because here we'll talk in detail about the SNAP 2022. Yes guys, SNAP, that is the exam conducted by the Symbiosis. Guys, don't be confused कि only Symbiosis Institute इसे accept करते हैं. Lot of private institutes are there who accept this SNAP score. Yes guys, stay tuned with me because here we will discuss in detail about the important dates. टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकती है फॉर 2022, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, व्हाट विल बी द कट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ईच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, आइदर दे इंक्लूड जीडी, वैट और द पीआई, अगर है तो कितना वेटेज है, टॉप इंस्टीट्यूट्स वो एक्सेप्ट द स्कोर एंड द प्लेसमेंट स्टैट्स. स्नैप, द सिम्बायोसिस, वर्थ इट? ऑल्दो ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, क्या फी स्ट्रक्चर यहाँ हाई होने वाली है, प्लेसमेंट स्टैट्स कैसे होने वाले, will it provide the best ROI, or finally is it worth? Yes guys, let's find out all the answers. So before moving further guys, batches we already launched. All those candidates want a preparation, you can start with us. You can prepare for MBACET, CAT, MAT, ATMA, ZAT, IFT, CMAT, SNAP and even the NMAT, and lot of other entrance exams are there. So call on 8828581455 and visit our website manual.com/MBAentrance for all the pre-recorded stuffs. Guys, you will get all these features, mentorship, complete guidance about the selection process criteria, whatever they includes, as we discussed GD, VAT, PI and even lot more. So let's talk in detail. The SNAP, it is nothing but the Symbiosis National Aptitude Test conducted by the Symbiosis International, the deemed university. Guys, Symbiosis University is one of the best private university in India, and according to NIF, we already discussed in our previous video, it comes at 17th position. Yes guys, the Symbiosis is the best one and that's why you should target it. But what are the programs? Here you can pursue the MBA, not even MBA but lot more specializations. Let's talk in detail. So important dates guys, registration commences on, see the data of 2021, 31st of August guys. 5th of August I got one update, 5th of August might be इसको लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, बट मिड ऑफ अगस्त आप समझ के चलो कि यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई एंड इट विल लास्ट अप टू अक्टूबर एंड. ओके, लास्ट ईयर ये थोड़ा लेट हो चुका है, नवंबर 30 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हुआ था. फी पेमेंट 30 नवंबर, एडमिट कार्ड 4th of December एंड एग्जाम जो थे गाइस 3 times. ओके, 19 दिसंबर एक स्लॉट एंड देन in Jan there were 2 slots, 8th of January and 16th of January. अब इसमें क्या हो सकता है guys, the difficulty level of the paper might be easy in the first slot, second moderate हो सकता है third one easy हो, moderate हो या फिर काफ़ी difficult हो. And don't forget one thing, there is no normalization. Yes guys, so जो भी आप slot choose कर रहे हो, okay, either ये easy है, moderate है, आपको cut off clear करना है. We'll talk in detail about the cutoff also. Okay, announcement of result 1st of February. So guys, इस बार भी same repetition हो सकता है. Exam will be held in the multiple slots as described and you can choose any two. Okay guys, SNAP के लिए try कर रहे हो, don't think that कि मैंने CAT के लिए try किया था, ZAT के लिए try किया था, नहीं हो पाया. SNAP is there and guys, SNAP is worth it. क्यों? क्योंकि इसके प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं. व्हाई यू शुड चूज द सिम्बायोसिस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट एंड माइट बी यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. 50% मार्क्स with respect to the general category, 45% in case of reserve category candidate. Okay, candidates in the final year of graduation can also apply and there is no age bar. Simple. Let's talk about the paper pattern. Very easy guys, 60 questions, 60 minutes and 60 marks. Don't forget negative marking system is also there. Okay, 0.25 negative marking. Now within 1 hour आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा गाइस. जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं इसे, वर्बल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, anything you can say. Okay, so 15 questions from 8 marks per correct answer, 1 negative answer, 0.25. Okay, total marks will be 15 and maximum you have to give 15 to 20 minutes here. Okay, there is no sectional time limit, don't worry at all. Analytical and logical reasoning, 25 questions will be here. Okay, for 25 marks. Quantitative, data interpretation and data sufficiency, 20 questions guys, 20 marks. So overall 60 questions for 60 marks and for 60 minutes. So जो भी easy questions है guys, यहाँ maximum you have to give 30 seconds only. Okay, 1 minute is the limit for each particular question. 1 मिनट से एक्सटेंड करना ही नहीं है गाइस. विद इन 1 मिनट आपके आंसर्स आ जाने चाहिए. मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे 45 सेकंड मैक्स.
और डिफिकल्ट होगा देन उसको 1 मिनट और 1 मिनट और 10 to 20 सेकेंड आप दे सकते हो. वाई? क्योंकि आप यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, सो आउट ऑफ दीज 60 हाउ मच यू हैव टू स्कोर टू गेट इंटरव्यू इन द टॉप इंस्टीट्यूट सच एज SIBM Pune, then guys safe score should be the 45 out of 60 and easily you can get it. guys 1 घंटे का एग्जाम है यार, 1 घंटे में आप 45 नहीं ला सकते हो आउट ऑफ 60 easily. SIBM 42 to 43 marks. okay, percentile should be 98 percentile. SCM HRD 40 plus 97 का percentile. SIIB 38 to 40 93 का percentile. SIBM Bangalore guys 35 to 37 एंड SIOM इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो आप 33 प्लस 87 परसेंटाइल. ओके, सो रिस्पेक्टिव परसेंटाइल इन फ्रंट ऑफ यू, आपके बस स्कोर देखो. ओके, एंड यहाँ तक ही नहीं है गाइज, आफ्टर दिस को यू हैव टू क्लियर टू सेकेंड स्टेज. कैटेगरी वाइज कट ऑफ for merit list and wait list will be displayed on the website of respective institute when after these all. okay, after the second round. so this is the selection process. snap का score आपका 50% weightage होगा. group exercise will be there, 10% is weightage. personal interaction, okay, interview 30% and written ability test or writing ability test 10% weightage. overall out of 100 अब आप सेलेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज. आपकी जो मेरिट होगी वो जनरेट होगी. ओके गाइस, सो दीज ऑल आर द सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया एंड डोंट वरी एट ऑल, इसका प्रिपरेशन भी आपको कंप्लीट मिलने वाला है. मूविंग फर्दर, टॉप इंस्टीट्यूट. सो दीज ऑल आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स. 15 symbiosis institutes are there and guys symbiosis is the best business school among all the private one in India. गाइस प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं MBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू SIBM पुणे, SICSR MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ऑल दोज कैंडिडेट्स वांट टू चूज डिफरेंट प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन, आप चूज कर सकते हो. ऑल लिस्टेड हियर. एंड द MBA symbiosis from the SCMHRD, MBA from SIAB, the MBA इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत अच्छा स्कोप है गाइज यहाँ. ओके, द आफ्टर SIMS plain MBA and the other one these all. okay, MBA from SIBM Bangalore, MBA from SIBM Hyderabad, okay, and the MBA from SIBM Nagpur and the respective other programs. okay, so these all are the top institutes and even lot of private institutes are there who accept only snap score. okay, so you can target all those, but first preference should be the symbiosis. okay, now let's talk about the placement stats. See the figure guys, highest package 45.50 lakh per annum, 23.06 average package. look at the package guys. okay, more than JBIMS का average package कितना है guys? 23.16, same as that of JBIMS. okay guys, JBIMS का average package क्या है? 23.16 and the highest 44. and look the stats here. fee structure I know यार थोड़ा फी स्ट्रक्चर हाई जरूर है, बट फी स्ट्रक्चर 22 लाख अप्रॉक्स पकड़ के चलो SIBM पुणे एंड अदर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स देन 21 लाख एंड अंडर 20 लाख एट द सिम्बायोसिस. नाउ मीडियन पैकेज 20.80, PPO 97 PPOs. गाइस 97 कैंडिडेट को तो मिल चुका है PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर. दैट मीन्स भाई इंटर्नशिप हो गई, परमानेंट जॉब है तेरी, डोंट वरी एट ऑल, बस पास कर ले और आजा. ओके, look at the summer placement stats. 3.5 highest stipend, 2.33 average, 2.31 median average male stipend, 2.21 female, 2.59. number of offers see guys, 123 above 2.0, okay, 183 above 1.5, 205 above 1. okay, new recruiters 31 during summer internship and 43 new recruiters at the final placement. 100 plus companies visited, 217 offers. टॉप 50 को मिला है 32.78, टॉप 100 28.07, टॉप 150 25.43. गाइज लुक एट ऑल द स्टैट्स. एवरेज फीमेल 24.81 एंड मेल 22.31. पछाड़ दिया भाई सब बंदों को यहाँ. हाईएस्ट पैकेज फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यस गाइज मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन 45.50, जो हाईएस्ट पैकेज गया है मार्केटिंग वाले बंदे को मिला है. Thereafter leadership and the marketing, thereafter the leadership and the marketing department 36.83 lakh per annum. Highest CTC through the human resource, the HR specialization 30.06, through the operation 28.50 and highest CTC for the finance candidate 24 lakh per annum का पैकेज. Guys, it's worth it. आपका जो फीस 2 साल में जा रहा है वो 1 साल में आप वसूल कर रहे हो. सी द एवरेज पैकेज यार 23.06 और उतना तो फी स्ट्रक्चर आपके SIBM पुणे का भी नहीं है. दैट मीन्स उतना है. ओके, 1 लाख कम है.
तो 23 एवरेज पैकेज आपको मिल रहा है और 22 लाख आप 2 साल में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो इट्स वर्थ इट, अच्छी ROI मिल रही है। सो ऐसे इंस्टीट्यूट को छोड़ना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द स्नैप एंड book your seat at all these top notch country and place yourself in these top notch companies, in all these top notch companies guys, ये सारे recruiters यहाँ आते हैं, so it's worth it. Let's start preparation for the snap 2022. Join our classroom sessions at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar. Pan India students, you can interact live with us, so call on 8828581455. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.